Good morning students. In this video, we will be talking about the applications of LCR circuit. First of all, we will draw a graph of variation of current with the frequencies. Now, this graph has to be understood. We know that inductive reactance is equals to L omega. It means when you increase the value of omega, the value of XL will increase and the current will decrease. यानी कि frequency बढ़ाने पर current decrease होगा. Okay, connect it logically. I am going through it once again. When you increase the value of omega, the value of XL will increase. As the value of XL increases, the value of current will decrease. Again, see, if you decrease the value of omega in the equation of XC, if you decrease the value of omega, XC will increase and then again the current will decrease. ओके तो यानी कि फ्रीक्वेंसी को अगर आप कम करते हैं तो भी करंट कम होता है, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं तो भी करंट कम होता है. देयर इज वन पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी एट विच द सर्किट passes maximum current. What is the value of that frequency? You very well know the value of that frequency is resonant frequency. Okay, what is this resonance frequency? Resonant frequency omega r is equals to 1 by root of LC. यानी कि इस फ्रीक्वेंसी से अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, ठीक है, ओमेगा आर से अगर मैं फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देता हूं, देन द करंट इन द सर्किट विल डिक्रीज. अगर मैं इस फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी अप्लाई करता हूं, देन ऑल्सो द करंट इन द सर्किट विल डिक्रीज. But only at this frequency the current in the circuit becomes maximum. Okay, so this is the variation of current. As you decrease the frequency, current decreases. As you increase the frequency, current decreases. Now, the upper graph is drawn by taking R is equals to 10 ohms. LCR circuit के अंदर जो resistance होता है, अगर हम उसे 10 ohm रखें, then we will get this type of graph. But if I change the resistance, I increase the resistance up to 100 ohms, then the graph will be like this. Okay, now यहाँ पे omega r जो है, that is what? That is the resonant frequency, and at omega 1 and omega 2, something is taking place. At the frequency omega 1, the current will be exactly 1 upon root 2 times the maximum current. At frequency omega 2 also, the current in the circuit is 1 by root 2 times of maximum current. ठीक है, तो जब तक किसी भी सर्किट में से कितना करंट पास हो, ठीक है, सपोज सर्किट में मैक्सिमम करंट है I0, तो उस समय उसकी पावर कितनी होगी? द पावर इन द सर्किट विल बी I स्क्वायर इंटू R. ठीक है, अब कौन सी पावर की वो वैल्यू है जब तक करंट ठीक से सर्किट में पास हो जाए और सर्किट की फंक्शनिंग खराब ना हो? दैट इज एग्जैक्टली हाफ ऑफ दैट पावर. ओके, व्हेन द पावर बिकम्स हाफ, व्हाट इज हाफ ऑफ दिस? हाफ ऑफ दिस इज P डैश विच इज I0 बाय रूट 2 स्क्वायर्ड इनटू R. यानी कि जब करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? मैक्सिमम करंट की 1 अपॉन रूट 2 टाइम्स, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या होगा? द पावर विल बी एग्जैक्टली हाफ ऑफ द इनिशियल पावर. ठीक है, कौन से करंट पे ये पॉसिबल होगा कि पावर एग्जैक्टली हाफ हो जाती है? इट इज एट द करंट I0 बाय रूट 2. ठीक है, तो हमें ये एश्योर करना होता है दैट करंट कभी भी I0 अपॉन रूट 2 से कम नहीं होना चाहिए. So for the better operation of an LCR circuit, the circuit is only moved between these parts. Okay, यानी कि power becomes half. So this is how the LCR circuit is functioning. All right, you need to understand this graph. Okay, I have drawn two graphs. One is for resistance 10 ohms, one is for resistance 100 ohms. All right. ठीक है, this is just an indicator, nothing else. This is just indicating that when the resistance is increased, the peak current in the circuit will decrease. Clear? Now the use of LCR circuit. See, here I have a radio receiver.
What is it? A radio receiver. This is antenna. The antenna is catching different frequencies from different radio stations, and this is our LCR circuit. This is connected to LS, a loudspeaker. Now what is happening? Suppose the frequency of the three signals is F1, F2 and F3, or you can say that their frequencies in terms of omega is omega x, it is omega y and omega z. Okay, आपको अगर ओमेगा z वाला रेडियो स्टेशन सुनना है तो what you are going to do? You are going to change the value of capacitance in this circuit. ठीक है, आप कैपेसिटेंस की वैल्यू यहां इस सर्किट में चेंज करेंगे इस फॉर्मूले के हिसाब से. ठीक है, व्हेन द कैपेसिटेंस चेंजेस, और कैपेसिटेंस को इस तरह से चेंज करना है दैट ओमेगा आर बिकम्स इक्वल टू ओमेगा जेड. क्लियर? नाउ व्हेन दिस हैपेंस, all the three signals will be received in this inductor, but the current for this particular frequency will become maximum. इसका करंट मैक्सिमम हो जाएगा, राइट? सो द सिग्नल दैट इज ट्रांसफर्ड टू दी LCR सर्किट विल बी ओमेगा जेड. ये वाला जो सर्किट है इसमें ओमेगा जेड वाली फ्रीक्वेंसी चली जाएगी और वही लाउड स्पीकर से आपको सुनाई देगी. नाउ इफ यू वांट टू चेंज द रेडियो स्टेशन, now you want to listen to this radio station omega y, what you are going to do? You are going to change the value of C in such a way that omega r becomes equal to omega y. Right? Now what will happen? This inductor will receive all the three frequencies omega x, omega y and omega z, but the current will be maximum for which frequency? Omega y. Right? So which frequency will be transferred to the LCR circuit? It will be omega y. And which music will be played by loudspeaker? It will be of omega y. So this is a radio receiver, also called as channel selector. Okay, ठीक है? तो this is the application of LCR circuit.